हेलो बच्चों। लास्ट सिविक्स का ये पहले चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। तो हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये पेज नंबर कितना है, 10 out of 114। हाँ, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का दूसरे सेकेंड साइड से स्टार्टर है। In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. First, power is shared among different organs of government, such as legislature, executive, and judiciary. Let us call this horizontal distribution of powers because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. Last year, we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. This arrangement is called a system of checks and balances, see, which is in India. तो among different organs of government, तो यहाँ पे ये नहीं है कि कौन माइनॉरिटी में मेजोरिटी में, इससे कोई मतलब नहीं है। ये है कि हाँ, एक सिस्टम बना दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जिसको जिसको हम लोग मालूम है। इसमें नहीं पढ़ाया गया, पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज दिस। सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पहले क्या था, और अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी क्या है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री और गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. We have one prime minister and many CM, chief ministers. The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. In India, we call them state governments. In central, in Delhi, 1 p.m. central government, union government. In states, state government. This system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state governments. But in those countries like ours, where there are different levels of governments, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. That is why what they did in Belgium, what was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power. We shall study these at some length in the next chapter. ठीक है, तो जो बेल्जियम ने ऑप्ट किया डिवीज़न ऑफ पावर विद इन फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और जो कि श्रीलंका ने ऑप्ट नहीं किया. Power may also be shared among different social groups, such as the religious and linguistic groups. Community group in Belgium में है, is a good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislatures and administration. Last year, we studied the system of result constituencies in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. In chapter 3, we shall look at various levels of accommodating social diversities. Fourth, power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand.
In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. हर जगह एक है ना कि ये सभा वो सभा, ये ग्रुप वो ग्रुप हमारे है कंट्रीज में है, और इट इज़ गुड फॉर अस। अगर सब कोई अपना अपना काम भी करेंगे तो एज यूजल पूरा हो जाएगा, बट हाँ, सबको अपना अपना काम करना है, दूसरे के पावर में नहीं बोलना या फिर इंटरफेयर नहीं करना. They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. In chapter 4, we shall study the working of political parties, pressure groups, and social movements. ठीक है. अब here are some examples of power sharing. Which of the four types of power sharing do these represent? Who is sharing power with whom? तो हाँ, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा कि the Bombay High Court ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living condition for the 2000 odd children at 7 children's home and in Mumbai. Second, the government of Ontario state in Canada has agreed to a land claim settlement with the Aboriginal community. The minister responsible for Native Affairs announced that the government will work with the Aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation. Russia's two influential political parties, the Union of Right Forces and the Liberal Yabloko movement, agreed to unite their organization into a strong right-wing coalition. They propose to have a common list of candidates in the next parliamentary elections. The finance ministers of various states in Nigeria got together and demanded that the federal government declare its sources of income. They also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state governments. तो इसमें आपको कौन सा गवर्नमेंट किसके लिए है ये देखना है. सी exercises. What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each these. So हम ये पूरा चैप्टर है, मतलब ऐसा सिविक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि इतना पढ़ो या इतना पढ़ो. स्टोरी क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, हमें हर चीज़ को पता होना चाहिए. तो ईच वन लाइफ, ईच वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कि पावर शेयरिंग में क्या होता है और क्या कितने तरीके के पावर शेयरिंग हमने इसमें पढ़े हैं. तो हमने 4 तरीके के पावर शेयरिंग हमने पढ़े हैं. और लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि दिमाग में तो आ जाता है, हम लोग देखते हैं आसपास, हम देखते हैं इसलिए हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन लिखते वक्त दिक्कत होती है. तो प्लीज़, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अच्छा है, बट सिविक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी को भी लिखिए तो नंबर अच्छा आएगा, और इससे आपका भी कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ होगा. ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है इतना, मतलब इतना टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर आप लोग कोचिंग में पढ़ते हो, बट आप लिख नहीं पाते हो. आपके दिमाग में तो आ चुका है सब, बट लिखते नहीं. आप लोग कोशिश करो एटलीस्ट एक से दो बार एग्ज़ाम के पहले ये लिखो. Okay, state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context. तो एक एक बार ये सब लिखो, ठीक है. ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है ढूंढ के, क्योंकि इसी में है. और उसके बाद जो इसमें है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजली पुट फोर्थ और ये सब है, ये सब आप ही को करना है. कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है 10th लेवल. 10th हमें आगे बढ़ने के लिए है, बस हमें एक माइलस्टोन है ये 10th. दैट इज़ नॉट वेरी हवा टाइप, बट हाँ, एक टास्क दिया गया है आपको, उसको कंप्लीट अच्छे से करना है. तो कोशिश कीजिए हर सब्जेक्ट में अच्छा कीजिए. मैथ्स फिजिक्स में आप लोग अच्छा कर रहे हो, इसको भी और पढ़ो. थैंक यू. नेक्स्ट में हम लोग सिविक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और या हिस्ट्री जो भी देखेंगे कौन सा स्टार्ट करना है. ओके, बाय, ऑल द बेस्ट.